अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम पीपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री का पास पेपर डिस्कस करेंगे। ये 2020 का पेपर है और ये तमाम एस्पायरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं 2022 में, या उससे बाद के होने वाले जो हैं एग्ज़ाम पीपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री के, उस सब के लिए जो है ये हेल्पफुल होगा। ये कंप्लीट सॉल्व पेपर है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज़ rough iron, steel, pig iron or nickel steel, and the correct option is alpha, that is rough iron. The second one is hydrogen bomb is based on the principle of, and the correct option is nuclear fission. इसके बाद next question है the SI unit of equivalent conductance is ohm per centimeter, Siemens meter square per equivalent, Siemens per equivalent or mho per centimeter, and the correct option is beta, Siemens meter square per equivalent. Next question is which one of the following is a non-metal that remains liquid at room temperature? And that is bromine. Bromine is non-metal that remains liquid at room temperature. And the next question is which one of the following are chemical changes? Cooking of food, digestion of food, freezing of food, or both A and B. So cooking and digestion, these both options are correct. These both are chemical changes. Which one of the following is not a mixture? So mercury is not a mixture, cement, milk, air, all of these are mixture. Among the given nutrients, milk is a poor source of vitamin C. Vitamin C के अलावा बाकी तमाम जो चीज़ें हैं मिल्क में abundantly present होती हैं. Next question, question number 8. A breath test used by traffic police to check drunken driving uses. तो correct option जो है इसका potassium dichromatic sulfuric acid. This is the correct option. Next question is brass gets discolored in air because of the presence of the which one of the following gas in the air? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो है ये अपना कलर लूज कर देता है, डिस्कलर हो जाता है. What is the structure of IF7? Pentagonal bipyramid is the structure of IF7. Next question is what is the chemical name of the compound Cu2CU3? तो इसका जो है केमिकल नेम वो कॉपर कार्बोनेट है. चार्ली जो है सी ऑप्शन वो करेक्ट है. इसके बाद जो क्वेश्चन है इज C2 पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? तो ये डायमैग्नेटिक होता है C2, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा. व्हाट इज़ द आईयूपैक नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड? HC3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन, ब्यूटानोल, डेकानोइक एसिड. तो मिथाइल एसिटाइलिन जो है इसका आईयूपैक नेम है. Which one of the following is amorphous solid? Quartz solid quartz glass और SiO2, ये जो है amorphous solid है. Permanent hardness of water can be removed by adding washing soda. Charlie is the correct option. You can read the remaining option as well. Give the common name for the following compound. CH3 taken twice, CH single bond, CH2 bond, Br. तो isobutyl bromide is the correct option and its common name. A mixture of sand and naphthalene can be separated by sublimation. तो ये FSC में भी आई थिंक मेंशन है, प्रैक्टिकल भी है. Which solution is most concentrated? The last option 2.6 gram of solute in 2 ml of solution, that is most concentrated, and all of the other option are less concentrated as compared to this option. Next is what is the third most common gas found in the air we breathe? And the option for this question are here argon, neon, carbon dioxide or hydrogen. So the correct option is argon. And the question was what is the third most common gas found in the air we breathe? Which one of the following substances does not have a melting point? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ग्लास है. ग्लास के अलावा बाकी तमाम का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है. येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर. यूरेनियम ऑक्साइड जो है इसको येलो केक कंसीडर किया जाता है जो कि
बॉर्डर्स में स्मगलिंग के दौरान यूज़ होती है या इसको स्मगल किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज़ होमोजीनियस? And the beta option, methanol and water, these are homogeneous mixture and other may be heterogeneous. Cobalt 60 is commonly used in radiation therapy because it emits gamma rays. Charlie is the correct option. The MKS system was first introduced by George. NH3 oxidation number is 0. अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0. सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल lose water molecules. This property is called hygroscopy, deliquescence, efflorescence, or none of these. So efflorescence is the correct option. The absolute value of charge on electron was determined by R.A. Millikan. What is the element present in urea? Carbon. तो एलिमेंट्स बताने हैं हमने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तमाम जो हैं वो यूरिया में प्रेजेंट हैं. इन नॉन एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर इज ऑफ मेटल्स. अब तक जो एनिमल डिस्कवर हो गए हैं उनमें मैक्सिमम जो हैं वो मेटल्स हैं. व्हाट आर लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड? कार्बन मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन को पॉलीमर्स कहते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन चार्ली है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो बीटा ऑप्शन जो है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन इक्विलिब्रियम, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. बाकी तमाम जो हैं वो करेक्ट हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद एड्सॉर्प्शन? अल्फा ऑप्शन इज G, H and S all are negative. G and H are negative but S is positive. Charlie option is G and S are negative but H is positive. G is negative but H and S are positive. So Charlie is correct option. The next question is, in which year was the valence bond theory introduced? 1927 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया. द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. चार्ली ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. इथीन एंड इथेन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय पासिंग इट थ्रू अमोनिकल, जिसका फार्मूला Cu2Cl2 है. इसके थ्रू जो है इनको सेपरेट किया जाता है. डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question is, 1-butene and 2-butene can be identified by using which one of the following reagent? The Charlie is the correct option, NaNH2. The unit of conductance cannot be expressed in mho, ohm, -1, Siemens or ohm per meter. तो ओहम पर मीटर में इसको जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया जाता. बाकी तीनों जो यूनिट्स हैं मोहो, पर ओहम या साइमंस, इनमें इसको एक्सप्रेस किया जाता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कैटलिस्ट इन अ क्रिस्टल एटम्स आर लोकेटेड एट द पोजीशन ऑफ. द करेक्ट ऑप्शन इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. The energy released in the form of nuclear radiation in addition to heat and light during nuclear reaction is known as nuclear energy. तो करेक्ट ऑप्शन इसका बीटा होगा. The next is, the octet rule is not valid for the molecule of carbon monoxide. The variations in enthalpy that cannot be detected per calorimeter can be detected with the aid of Hess's law, and that is correct option. The oxidation number of iron in Fe3O3 is both A and B, +2 as well as +3. So last one option जो है डेल्टा, ये correct होगा. Bleaching powder's chemical name is calcium oxychloride. Calcium oxychloride is the bleaching powder's chemical name. The ratio of the water molecule in plaster of Paris and gypsum is 1:4. In what manners will increase of pressure affect the following equation? So the equation is mentioned: carbon plus water gives us carbon monoxide plus H2.
ऑप्शन आर शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन, यही जो है वो करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा। आप जो है वो बाकी ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। अगर सारे ऑप्शन की ही रीडिंग स्टार्ट कर दी जाए तो इसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम जो है जस्ट स्टेटमेंट और करेक्ट ऑप्शन जो है उनको देखते जाते हैं, बाकी जो है मेंशन है आप उनको रीड कर सकते हैं। कुड BF3 acidity be clarified using one of the following concepts? The correct option is Charlie Lewis concept. Equimolar solution of the following compounds are prepared separately by water which have the lowest pH value. So alpha is the correct option. BeCl2 has the lowest pH value. And the next question, that is question 48. And the statement is addition of which chemical will decrease the hydrogen ion concentration of an acetic acid solution. The delta is the correct option, NaCN. How many milligrams of tritium will remain after 49.2 years of the starting amount is 32 milligram. The half-life of the tritium is 12.3 years. तो हमने जो है मिलीग्राम अमाउंट मालूम करनी है ट्रीटियम की, जो कि 49.2 ईयर्स के बाद रहेगी, दैट इज़ 2 mg। इसको जो है आपने सॉल्व कर लेना है, हाफ लाइफ के जो है प्रॉपर उसका फार्मूला या उसका मेथड जो है। The next question is find the alkene with maximum stability, and the beta is the correct option, trans 2-butene. 51 question is which one of the following process is used to do maximum work done on the ideal gas that is compressed to half of its initial volume, and the correct option is adiabatic, delta 1. Range of the pH scale is 0 to 14, तो 0 to 14, 0 to 7 जो है वो एसिडिक एंड नेक्स्ट जो है वो बेस होते हैं। इफ़ अ कंडक्टर लेंथ इज इंक्रीज 100% then keeping all other parameter fixed, what will be the increase in the power of dissipate? तो 200% जो है इंक्रीज आ जाएगा, बीटा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। The temperature coefficient of a reaction is 2. How many times the rate of reaction increases when the temperature is increased from 30 degree to 60 degree? तो टेम्परेचर जब डबल हो जाएगा तो इसका जो है ये 8 टाइम्स ये इंक्रीज हो जाएगा। Which of the following is an extensive property? Alpha temperature, pressure, mass या volume ratio और energy. So energy is extensive property and its correct option. Water is oxidized to oxygen by बीटा इज ऑप्शन KMnO4 से जो है वाटर ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज होता है। एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन अ सीरीज, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट, डिक्रीजेज विद increase in the atomic number, so this option is correct. When the salt bridge is removed from a cell, its voltage will decrease to 0. The next question is 59. Which one of the following gases has the lowest value of Henry's law constant? And the delta is the correct option. Carbon dioxide has the lowest value. The structure of CH2 double bond C double bond H2 is linear structure. So alpha is the correct option. The structure of hydrogen peroxide is non-planar. The next question is 62. Electrolysis of brine produces chlorine gas, hydrogen gas, sodium hydroxide or all of the above. तो इसका जो है correct option mention नहीं है, so it's up to your knowledge which one is correct. The next question is 63. The hybridization of phosphorus in POCl3 is the same as in phosphorus and PCl3. The first one is the correct option. The next question is 64. And the statement is a molecule with multiple covalent bonds is delta option N2. Which one of the following will have the maximum number of water molecules? 18 moles of water have the maximum number of water molecules. So the correct option is delta. The formula charge and the PO bond order in PO43 respectively are. So beta is the correct option, 1.25 and minus 0.75. Which one of the following does not have a permanent dipole moment? CS2, delta is the correct option. An element which is preserved under water is, that is the delta white phosphorus.
The next question is the fundamental particles present in equivalent number in neutral atoms are, and these are proton and electrons. Curdling of milk is an example of coagulation. The oxidation number of chromium in K2Cr2O7 is +6. The question 72. A particle with which is similar to electron is beta particle. The formula of C6H14 represents the hexane. The yellow element that stings when burned is sulfur, so alpha is correct option. The next question is what is the systematic name of PbO, and Charlie is the correct option. Lead oxide. Oxidation number of S in H2SO4 is +6. The next question is question 77. Which one of the following element cannot be detected by Lagrange's test? So the delta option is correct, fluorine. The water molecule has a dipole with the negative portion. The Charlie is the correct option, pointing towards the oxygen atoms. Which one of the following is the lightest metal? Lithium is the lightest metal among the given options. Question जो है 80. Recycled plant matter is known as compost. Charlie is the correct option. The structure of IF7 is pentagonal bipyramid. The alpha is the correct option. Number of moles of solute present in 1 liter of solution is molality. Molality की definition I think. All of the following are constituents of RNA molecule except thiamine. Alpha is the correct option. What type of bond is joining the two hydrogen atoms? The covalent bond is responsible for the joining of two hydrogen atom. DT ISPR अब जो है ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस वक्त जो है DT ISPR जो है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार यही थे. नेक्स्ट जो है DT ISI फैज़ हमीद. बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन. Cellulose digesting enzymes not present in human. Herbivores can digest. Cellulose digesting enzymes not present in humans. Herbivores can digest because इसमें herbivores में cellulose digesting enzymes present होते हैं. Humans में cellulose digest नहीं होता क्योंकि उसमें जो है वो present नहीं होते. Question 88. Hazrat Musa crossed which river? तो beta is the option, Red Sea. Complete the sequence UOI dash and A. The alpha E is the correct option. If a worker does his duty in 10 hours and B a worker in 8 hours, what time it will take to do if they work combined? Delta is the correct option. If they work together, they can complete it in 40/9 and 4.44 hours. Second longest river of Pakistan is Chenab. Ghazi Ilmuddin tomb located in beta option is correct. Miani Sahib graveyard in Lahore. Highest civil award of Pakistan is Nishan-e-Pakistan, and highest military award is Nishan-e-Haider. Speak and span means neat and clean. Alpha is the correct option. Muhammad bin Qasim was the nephew of Hijaz bin Yusuf. Beta is the correct option. And the next question is 96, and the statement is Gudni Johnson is the newly elected president of which country? So Iceland is the option tha. Which gas is not directly involved in the greenhouse effect? Nitrogen has no role in greenhouse effect. Ozone depletion due to chlorine in chlorofluorocarbons. So delta is the correct option. The shape of water droplets is due to surface tension. Beta is the correct option. And the last question is related to Urdu. I think इब्हाम गोई किसने के दौर में शुरू हुई? इब्हाम गोई जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में शुरू हुई, तो इसका जो है वो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है. तो ये तमाम क्वेश्चन थे इस पेपर के जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिए. ये 100 के 100 क्वेश्चन जो है सामने आए थे आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किए क्योंकि केमिस्ट्री के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे.
और अगर इसमें कहीं पे भी कोई ऑप्शन में या क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में मिस्टेक है तो आप लोग उसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी पर्सनल फील्ड जो है वो केमिस्ट्री नहीं है, मेरी जो है फील्ड वो ज़ूलॉजी है। तो इसलिए जो है मैंने आप लोगों के साथ ये जस्ट शेयर की हैं, क्योंकि ये सॉल्व थे ऑलरेडी, तो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।